ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Jasdeep Kaur. People know me by the name of Kenny Gugia also. I'm a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Bilawal अंग 802 of Shri Guru Granth Sahib जी। पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी विच अमल करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग बिलावल महला पंजवां। कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। राग बिलावल 5th महल 2nd house to be sung to the tune of यानड़िए, which means राग बिलावल कर दूजे विच गुरु अर्जन देव जी की बाणी इस शब्द नूं यानड़िए दी सुर विच गाया जावे, जिस दी पहली तुक है यानड़िए मानड़ा काहे करे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर सियाणपा बिरथिया प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ। अवर सियाणपा बिरथिया प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ, which means you are the support of my mind. Oh my beloved God, you are the support of my mind. All other clever tricks are useless. Oh beloved God, you alone are my protection. I repeat, all other clever tricks are useless. Oh beloved God, you alone are my protection. If you keep on taking the same action again and again, you can't expect different results. This is how we can relate it with life. ज़्यादा सियानपा करन नाल, ज़्यादा clever tricks करन नाल कुछ नहीं हुंदा। इट इज़ जस्ट लाइक बैंगिंग योर हैड अगेंस्ट द वॉल। दीवार ते सिर मारते रहोगे तो की होएगा? दीवार तो कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना सिर लहूलुहान होर हो जाएगा। सो जो चीज़ बदली नहीं जा सकती उसते वास्ते असी बहुत ज़्यादा सियानपा या ज़्यादा असी क्लेवर ट्रिक्स करते रहिए, उसका रिजल्ट या तो आंदा नहीं है या फिर रिजल्ट माड़ा हुंदा है। Now let's look at this way. Life is equal to x plus y. असी मैथमेटिक्स विच पढ़िया होएगा x plus y, where x is constant and y is variable. It's just like that. x is constant, जिवें तुसी जी पाई दी वैल्यू है 3.14, वो तुसी approximately वो तुसी चेंज नहीं कर सकते हो, that is constant. So the value of x is constant. For example, if you are overweight, you can't change it. तुसी पहले तो उसनू एक्सेप्ट करोगे ना, जो है सो है। मान लो किसी नू बहुत घर विच बीमारी हो गई, that is there, you have to accept it. For example, business विच लॉस हो गया, और सच है बिजनेस इज लॉस होया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट अगर तुसी उसनू लै के परेशान हो जाओगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही कुछ चलाकियां करी जाओगे, ਉਹਨੂੰ ही कुछ चेंज करने की कोशिश करते जाओगे, जो रियलिटी है वो करन नाल कुछ नहीं होना। यू हैव टू स्विच टू वाई, विच इज़ वाई इज़ वेरिएबल, जो कि तुसी अपने लेवल ते चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ओवरवेट, what you can do is with the relevant exercise, relevant diet, तुसी अपना lifestyle change करके, थोड़ी meditation करके, you can change the structure of your physique. Similarly, for example, business is loss हो गया, you can hire some good mentor, तुसी business करन दा तरीका change कर सकते हो। In this way you can make a difference in your business. फॉर एग्जाम्पल, घर च किसी को बीमारी हो गई, कोई इस तरह की बीमारी जो कि एक डेडली डिजीज़ है, बट वो वास्ते तुसी कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर इज़ डूइंग हिज और हर बेस्ट,
ਬਟ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਦ ਪਰਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। that means that we have to be in the state of why, that is variable। constant ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? constant is again like banging your head against the wall। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੀ ਇਨ ਵਾਈ, that is variable, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। circle of concern and circle of influence, you don't have to be in the circle of concern। ਉਹਨਾਂ concerns ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। you have to be in circle of influence। how you can influence that problem? You can influence that problem by changing your way of being, by taking different actions, by seeking the support of the expert। so ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ, ਫॉर एग्जांपल ਇਟਸ ਔਰ ਹੈਲਥ ਏਰੀਆ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਔਰ ਰਿਸਪॉन्सिबिलिटी ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ दैट। आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट we can do something about that। that is be in the state of why, be in the state of variable, and ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ you can really make a difference। so ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵੇਰੀਅਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਸ ਨੇ, you need to accept that and then think that how you can make a difference in that area। so do this, then share your experiences with me। take care, be balanced, be happy। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Why